एंड मनु इज दिस गाय, और इन्होंने जो है एक इन्होंने गे कैरेक्टर का ये निभाया इसमें, और इन्होंने ऑब्वियसली अमेरिकन लड़की का। यू वांट टू आ जाना। और म्यूजिक भी दे स्टार्ट इंग्लिश। French, फ्रेंच। Marathi. First of all, I want to ask what kind of role you are playing in the movie and why did you select to play the role? What was so challenging as such? I play Kushal Punjabi's wife, Amin's wife. My character's name is Amy, and she's from America. She's from New York. So she's essentially a Gori, and she comes into this family. She's married Kushal without meeting the family, so this is their first time she meets the family. And her character in the role is very important because she allows people to realize that this family, although they're crazy, they're actually very special. You know, Prakash has made fabulous film doing his career as such. But here is a producer, he's not a director. So that Prakash name really inspired to be a part of the movie. Yeah, of course, definitely. When they first called me to audition, I didn't want to audition because it was a foreigner role and I don't like doing foreigner roles. But when they said it's Prakash Jha production, I got excited because I'm a big fan of his movies. He's done 22 plus films and he's fab. What kind of role you are playing and why did you select to become part of this movie? I'm playing a gay character in the movie, and as soon as I read the script, I was like, written by him, Suhas. I was like, this is something that's never been done before in India. Like there was a marriage scene where a guy is getting married to another boy. So I thought I have to do this. It was a very different thing. This kind of out of box kind of thinking. कैसे है मतलब? Did you get inspired from somebody or? Well, not really. I mean, we have a lot of gay friends, but one thing which really troubled me and Ritesh Menon, the director of this film, Crazy Cooker Family, the gay community has been completely being misrepresented. You know, the people have been showing it like a caricature or like, you know, showing like a joke, which it's not. And we have a lot of gay friends, absolutely the most amazing, creative, fun people. So we're like, let's show it the way it is. And how far Prakash was convinced about the script? Prakash was completely convinced about the script because the minute he read it, we signed this film in 15 minutes. Okay. He read the script one night before and he called us the next day. He signed it up in 15 minutes. He was that convinced. But still, what do you think? The audience acceptation कितना रहेगा इस फिल्म को मतलब? Well, we've got some very good reviews from the critics. We are getting some pretty good numbers in a lot of places. So because for due to any it's not like it's a huge, like big names movie or something like that. We have some amazing names in the film. They're amazing actors. So I think it's working. I mean, the audience I think we really met up with all the expectations. Finally, one was from you. What is the USP of the film? USP क्या है इस film का अगर देखा जाए तो? I would say this film has many USBs, one of them being the acting. The actors are fabulous, fantastic. They're technically great, one of the best. They know the art of the craft of acting. Also, the editing of the film and the story. Everything is played very coolly. Nothing is over-exaggerated. And the film teaches you lessons that you can take home and appreciate the family that you have. So I think it's a small film with a big heart. Thanks. Thank you. Thank you. You got any compliment after watching the movie from anyone? हाँ बिल्कुल. They said my scenes were done very well. That my acting was good. थोड़ा सा अजीब लग रही है because my hair is blonde, but they thought I looked very pretty, like a Barbie doll. So I'm very happy. Yeah, my friends appreciated it, and that's about it. My family liked it. My friends liked it. The director liked it. So it was good. Thank you. Thank you so much. Thank you. Before asking about anything about the film, I don't know what is your background as such. Are you a filmmaker or you have done theatre? एक्चुअली मैंने एक दो फिल्में लिखी हैं. आई हैव रिटन संतोष सिवन जो हमारे कंट्री के एस सिनेमाटोग्राफर हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो उनके साथ मैंने 8-9 साल काम किया एज एन असिस्टेंट. उनके 2 फिल्में लिखी मैंने, एंड वन फिल्म वॉज अ नेशनल अवार्ड 2 नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म प्रारंभा करके. आफ्टर दैट अभी हाल ही में मैंने 2 सिनेप्लेस डायरेक्ट किए हैं. एक नंदिता दास वाली बिटवीन द लाइन्स का जो फिल्म वर्जन है वो मैंने डायरेक्ट किया, और एक महेश दत्तानी की लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश प्ले, इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्ले डांस लाइक अ मैन, उसका सिने प्ले मैंने डायरेक्ट किया है. एंड अभी ये क्रेजी कुछ एक्चुअली दूर तक सोचा नहीं था कि ये स्क्रिप्ट हम लेके प्रकाश झा के पास जाएंगे, बट व्हाट हैपेंड वाज वी हैव अ कॉमन फ्रेंड. सुहास और मेरे कॉमन फ्रेंड है अलंकृता श्रीवास्तव करके. तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट 1-2 साल पहले पढ़ा था, और ऐसे ही मैं उनसे मिला कहीं पे, एंड शी टोल्ड मी प्रकाश जी वांट्स टू प्रोड्यूस सम स्मॉलर फिल्म्स, व्हाई डोंट यू सेंड हिम द स्क्रिप्ट.
So I was not sure. I said, but Prakash Jha is such a big person and different kinds of films. How can I send him a comedy? Anyway, मैंने email किया. Next day, Prakash ji read the script. Afternoon, I was called to the office. I met him at 4 and by 4:30 he signed. You know, Shilpa Shukla, although is a versatile actress, but people remember her for BA Pass as well. Yes. role के लिए. तो उनको इस फिल्म में लेने का आपका मतलब क्या लॉजिक था? You know, last casting जो हम कर रहे थे, तो ये रोल में मतलब कुछ नाम आके गए बट कुछ एक्साइट नहीं कर रहा था बिकॉज ओवरऑल वी वांटेड टू डू समथिंग न्यू विद द फिल्म. इफ यू लुक एट द एंटायर कास्ट, बहुत ही अतरंगी कास्टिंग है. स्टोरी तो अतरंगी है ही बट कास्टिंग भी काफ़ी अतरंगी है. सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग नाम्स, इधर उधर हम लोग सब फेंक रहे थे एक दूसरे को आइडियाज़ के तौर पे. टीम में किसी ने शिल्पा शुक्ला बोल दिया ऐसे ही. एंड व्हेन वी हर्ड दैट नेम ऑल ऑफ अस वो 2 मिनट तक सब चुप थे कि कैसा नाम बोल दिया. एंड इमीडिएटली 2 मिनट के बाद सब स्माइल करते कि ये पहले क्यों नहीं सोचा हमने. सो इमीडिएटली वी थॉट it's a very different idea because Shilpa Shukla is seen as a very intense dark actress. No one sees her in comedy. But हमने उनको immediately phone किया, अगले दिन मिले and I loved her. उनका energy superb था, you know. So you know, last question. When the film completed and you know the trial show was done, प्रकाश का reaction क्या था फिल्म देखने के बाद कि उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया बिकॉज ही फ्रॉम द आई वुड से ऑलमोस्ट फाइनल कट जब पहुंच गया था उनको, जब हमने फिल्म दिखाई, साउंड भी फाइनल नहीं था, उनको बहुत अच्छी लगी पिक्चर. और जब हमने एक रफ मिक्स किया था फिल्म का तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी फिल्म. उनको हमने स्क्रीनिंग के लिए बुलाया मिक्सिंग थिएटर में. वो शो देखने के बाद वो उठे, स्माइल के साथ मुझे बोले, ऐसे कंधे पे हाथ रखा, बोला वेरी गुड, यू नो तुम्हारी फिल्म चलेगी, ऐसे बोल के निकल गए. वो मेरे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था. सो समहाउ ही बिलीव्ड इन द फिल्म. और उनका भी ऑब्वियसली बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था. एडिट में भी उनकी बहुत सलाहें ली हमने. Last question, what kind of film really you want to make? It's a comedy kind of film you want to make or any particular genre do you want to make or it's different kind of film you want to make? मतलब जॉनर स्पेसिफिक नहीं, बट डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि आज के ज़माने में फिल्म्स को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही चाहिए. आई बिलीव. तो आई वांट टू मेक सोशली रेलेवेंट पॉजिटिव फिल्म्स. इट कुड बी सोशल इशू ज़रूरी नहीं है बट उसका मैसेज पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए. आई डोंट बिलीव इन नेगेटिव की सिनेमा दिखाने के लिए आप मर्डर दिखाओ, ये दिखाओ, यू नो. आई डोंट बिलीव. आई फील कि आजकल दुनिया में वो जरूरत नहीं है, वो है बहुत दुनिया में. तो थोड़ा एंटरटेनमेंट एंड पॉजिटिव, एक होप आना चाहिए समाज. Thanks a lot, sir. थैंक यू.